Hello students, today we will learn multiplication of fractions by using these pictures. Okay, let's understand the rule of multiplication of fractions first. Let's see, here is one example. If we can see here in this square box, in this picture total parts are 9, and if I shed 2 parts, then how we can express this in fraction? It is 2 by 9. It is 2 by 9, and here also if I shed 2 parts, then it is again 2 by 9, and here is also any two boxes we can shed, no problem. Then it is also 2 by 9. Now 3 times 2 by 9 is repeated here. 3 times 1, 2 and 3. Then how to write 3 times 2 by 9? Okay, for times we need to we have to use here multiplication. What it means? 3 times 2 by 9. Now let's understand the answer. Let's find out the answer. Here अगर हमने वापस ये for answer I have drawn here one more picture. Again here are 9 parts. Let's see. तो ये सारे parts इसमें मिला के देख लेते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए. These two I'll shade here. कहीं पे भी आप कर सकते हैं, no problem. Again of another box, another picture, take these two shaded parts, and of third picture again take these two shaded parts. Then tell me now it's express this in the form of fraction. Then you can see here total 9 parts are there, and out of 9, 1 2 3 4 5 and 6, total 6 parts are shaded. मतलब हमें इसका आंसर क्या मिलना चाहिए? If 3 times 2 by 9 is there, then answer should be 6 by 9. Okay, then how to find out? See here, by simple rule. तो क्या हर बार आप क्या ये पिक्चर ड्रॉ करते रहने वाले हैं? नहीं. तो हम लोगों को यहाँ सिंपल रूल यूज़ करना है. 3 multiply by 2 by 9. 9 is divisor, 2 is in numerator and 3 is whole number. Then multiply these two only, 3 and 2. Actually we have studied this in 5th standard. Okay, recall this please. तो हमें सिर्फ किन की मल्टीप्लिकेशन करनी है? होल नंबर एंड न्यूमरेटर. ओके, होल नंबर एंड न्यूमरेटर. डिवाइज़र जैसे है वैसे रहेगा. ये डिवीजन में है. 9 हम लोग मल्टीप्लिकेशन में नहीं ले सकते हैं. देन हियर वी नीड टू राइट 3 into 2 upon 9. Then answer is 3 2s are 6 upon 9. Okay children, you understood? Here I have drawn 3 pictures and everywhere I have shaded 2 parts. तो ये बन गया 2 by 9, 2 by 9, 2 by 9. And here if I collect all these parts in one square, then it has become 6 upon 9. तो 6 upon 9 हमें आंसर चाहिए मल्टीप्लिकेशन का. By using rule how we can find? The rule is whole number multiply by numerator. सिर्फ ये whole number और उसका numerator multiply कर दो. Let's see here some examples. Here is 7 multiplied by 3 by 5. And children, I want to tell you that this full exercise 2.2 is based on multiplication of fraction by whole number और whole number by fraction. ओके, तो यहाँ पे रूल आपको समझ में आ गया होगा. होल नंबर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर मीन्स हियर ओनली 7 into 3 upon 5. आंसर इज 21 upon 5. एंड यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड आल्सो. ओरली मिक्स करना सीख लो आप लोग. सी 5 4 ज़ा 20, तो 4 आएगा क्वोशंट यहाँ. एंड 21 minus 21, आंसर इज 4 1 by 5. हियर 3 whole number. First we need to convert this into improper. 5 5 are 25 plus 1 26 upon 5. तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ भी क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3 multiply by 26 upon 5. Then what is the answer? 26 3s are 78 upon 5. तो ये भी आप लोग इजीली कर सकते हैं. 14
सॉरी 15 5 ज़ा 75, तो ये आंसर आ गया 15 3/5। हियर ऑल्सो अनदर टाइप, सी फ्रैक्शन इनटू होल नंबर, सेम प्रोसीजर, सिर्फ ऊपर वाले नंबर आपको मल्टीप्लाई करने हैं, नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाला नंबर को कुछ नहीं आप चेंज कर सकते हैं। 2 multiply by 4 we need to write here, and 3, 2 4s are 8/3. Then this also you can convert into mixed. Here also like this only, first convert into improper and then use the same procedure. Okay children, then let's see exercise 2.2 question number 1. Which of drawing A to D show? तो सबसे पहले देखेंगे 2 into 1/5, 2 times 1/5, वेयर इट इज़ शोइंग 2 times, यहाँ तो 2 times पिक्चर्स हैं, ये है 2 times, देन 1/5, इज इट 1/5? नो, इट इज़ 1/2, हियर इज़ 1/5, तो ये आंसर आ गया 1, इट इज़ 2 times 1/5. Okay, like this try to solve second, third and fourth. Now question number 2, here also same, 3 times 1/5, where it is 3 times 1/5, here 2 times, तो ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ पे ये 3 times है बट इट इज़ 3/4, तो ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ पे 3 times 1/5 एंड आंसर इज़ 3/5, तो ये हो गया आपका ए।